हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ग्लोबल मास्टर एसआईपी विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। दिस इज आवर नाइन्थ वीडियो ऑन द सीरीज, सो द this one will remain private. Every fifth video will be public, means the next video will be for public consumption. तो बेसिकली एक ग्लोबल मास्टर एसआईपी हम लोग क्रिएट कर रहे थे। I have given you the Excel as well, calculations method as well, and we are investing now. Don't go by the exact value, because based on your investments, exact value might change. Like currently, we are running the highest return on Nasdaq. Nasdaq has done well. S&P we are up, whereas gold we are down. Agriculture we are up, and regular income in terms of interest income dividend is coming from DIL. ये एसआईपी का वन ऑफ द की फोकस हैज बीन टू प्रोटेक्ट आवर वेल्थ ड्यूरिंग ये जो टर्मोइल टाइम आ रहा है रिगार्डिंग रिसेशन एंड अदर्स। सो मिक्स ऑफ ग्लोबल एसेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ओवरऑल अपना जो स्टेबिलिटी और वेल्थ ग्रोथ वो बरकरार रहेगा। सो इस एज पर रूल्स हम लोग इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, कोशिश करें थोड़ा लॉन्ग स्विंग खेलने का, बट दिस कैन बी डन इन डेली चार्ट एज वेल टू प्ले द शॉर्ट स्विंग। जो लोग मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है मार्केट, फॉर देम इट विल बी मोर सुटेबल। फॉर मोर पैसिव पार्टिसिपेंट्स दिस वीकली स्ट्रक्चर इज गुड। तो पहले हम लोग को डिसाइड करना होता है कि इस वीक का इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होगा, एंड नेक्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि ये जो एसआईपी है ये स्विच ऑन मोड में है या स्विच ऑफ मोड में है। तो चलिए पहले रेशियो डिटरमाइन करते हैं। दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गोइंग ब्यूटीफुल, लाइक यू कैन सी। सो लेट्स टेक SPY, that is S&P divided by GLD, that is gold। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि S&P बेहतर लग रहा है, ये लास्ट टाइम भी देखे थे। वी कैन गो ES1 एंड ऑल्सो GC1 इंस्टेड ऑफ ETF कंपैरिजन से हम लोग फ्यूचर कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं। सो इट इज क्लियर कि इक्विटीज बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो इक्विटीज पे ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा। नाउ इक्विटीज को थोड़ा देखना होगा अगेंस्ट एग्रीकल्चर हाउ दे आर डूइंग। So S&P in general is a representative of equity. So yeah, agriculture को high weightage मिलना चाहिए। I think once again $20 should go around agriculture. So equities are better against gold and silver, but not so good against agriculture. Let's now look at GLD by SLV, that is gold versus silver, or we can go GC1 by SI1. So gold is doing once again better compared to silver. So gold में higher weightage रहेगा compared to silver. So let's look at now SPY by U10, which is the bonds. Should we go for equity or it is equities? Bonds are not preferred at this point. सो बॉन्ड से थोड़ा दूरी रहेंगे, U10 से। इक्विटीज आर गुड। तो एक फेयर ब्रॉड आइडिया मिल जा रहा है। लेट्स गो बैक टू द एक्सेल। तो हाईएस्ट वेटेज पॉसिबल इन एग्रीकल्चर इज 20, सो वी विल गिव द हाईएस्ट वेटेज टू द एग्रीकल्चर। we'll give the lowest weightage to silver, that is 5%. We'll also give lowest weightage to U10, that is the 10-year bonds. And this one is always on. Last time we did 20, this time we can do 10. And equities have been doing better than gold, so S&P should receive higher weightage. But before that, let's थोड़ा compare करते हैं S&P to बाकी equities, then will be clear. So SPY by DIA, that is the S&P versus Dow. It is S&P that we become strong. So S&P पे highest weightage जाना चाहिए. Then we are looking at SPY divided by QQQ. So it is SPY going down. It is the Nasdaq that is the best. Let's look at DIA by QQQ. That is Dow versus Nasdaq. So Nasdaq is the best. Nasdaq में जाना चाहिए high weightage. And bonds have not been good, so stability हमें नहीं चाहिए immediately.
So Dow should receive the lowest weightage. Let's put 5% on the Dow. And let's Nasdaq will receive the highest weightage. तो पूरा मिला के 60% हो सकता है. Nasdaq we will invest around 25%. S&P we will do around 20% because S&P has been outperforming, and Dow Jones will do only 5%. What we can do is 50% equity कर सकते हैं, which we did 25-25. 5% हमें silver, 20% gold, so 75. 85%, and gold individually can take away 10%, and this bill, which is already always on, it will get 10%. So let us check 100 हुआ कि नहीं. 30%, 35%, 60%, 65%, 85%, 90%, and 100%. सो ओवरऑल वेटेज डिसाइड हो गया कि हायर वेटेज जा रहा है. देखिए एग्रीकल्चर, नैस्डैक, एसएनपी की तरफ. वेरी लो वेटेज जा रहा है टुवर्ड्स डाउ, टुवर्ड्स U10 एंड टुवर्ड्स एसएलवी. अब देखना होगा कि एसआईपी इज ऑन मोड में है या ऑफ मोड में. एसआईपी स्विच ऑन मोड में है या स्विच ऑफ मोड में. तो लेट्स चेक दैट. फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे एसएनपी को. इज एसएनपी ऑन? बैकग्राउंड ग्रीन, एसएनपी इज ऑन. एसएनपी एसआईपी इज ऑन. इज डाउ ऑन? डाउ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ फेस कर रहा था, बट अभी भी बैकग्राउंड इज ग्रीन, मतलब एसआईपी इज ऑन. हम लोग कम कर चुके हैं डाउ में, एज डाउ नॉट डूइंग वेल, बट डाउ में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे. अगर शाम तक ऐसा ही रहा, इवनिंग टाइम आई लुक एट अगेन, एंड इफ इट रिमेन्स लाइक दिस विल इन्वेस्ट. Next is Nasdaq. It will remain. We will invest. Next we will go to gold. गोल्ड के लिए हम लोग देख रहे हैं GC1. लास्ट टाइम बैकग्राउंड फिर से येलो हो गया. लास्ट टाइम जब हम लोग देखे थे दैट वाज अ बैकग्राउंड ग्रीन. तो बैकग्राउंड येलो होने से क्या होता है? वी गो फॉर अ पॉज मोड. लेट्स गो बैक टू द एक्सेल. %30 of the money present has to be withdrawn if short trend turns neutral. तो 30% जो पैसा है यहाँ पे, we will take it away from the gold. So instead of investing in gold today, we are going to withdraw 30% of the money that we have invested, as well as ये जो $10 है वो गोल्ड के अंडर कैश होल्डिंग में चला जाएगा. लास्ट टाइम ग्रीन हुआ था, so we invested. once again in turned bad, तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे. 45 का U10 बन जाएगा 50. Gold will withdraw around 30% plus $10. So let me put 60 first, क्योंकि आज का इन्वेस्टमेंट. तो ये स्विच ऑन नहीं, पॉज मोड में हो जाएगा. पॉज मोड. पॉज मोड मतलब इसको कलर चेंज कर देंगे. सो पॉज मोड में जा चुका है गोल्ड. तो गोल्ड सिल्वर लुक्स लाइक अवॉइडिंग. लेट्स लुक एट DBA एंड U10 इंडिविजुअली सबको एक बार. So equities on, gold off. Let's look at silver, SI1. It is background red. हम लोग already 70% of the money withdraw कर चुके हैं from silver. We are not investing. Let's look at DBA, that is the agriculture DBA. DBA is clear कि ऊपर की तरफ जा रहा है. Will remain invested in DBA. For interest rates, we will take a look at interest rates. U10 bond investment के लिए हम interest rate देखते हैं. Background अगर green है इसका मतलब we will not invest. Opposite चाहिए interest rate में. Bond investment के लिए interest rate should go down. Now as interest rates going up, we are not interested in the bonds. So ये pause mode में, exit mode में ही रहेगा. Let's get back. So once again clear हो गया. एक बार पिक्चर रिवाइज कर ले. गोल्ड पॉज मोड बट 10% एलोकेशन.
S&P pause mode 20% allocation. S&P switch on mode 20% allocation. Dow Jones 5% allocation. Nasdaq 25%. Highest allocation is going towards Nasdaq. Even Nasdaq can become, say, 30%. We can do Nasdaq. And 15% we can do to S&P. So that same 50% weightage raha. Now silver 5% will invest, but not will buy today. It will go to cash holding. Agriculture will invest today, and it is in a switch on mode. 5% of the money will invest in long-term bonds, but that not right now. They will go into cash holding. And BIL is always on. It's an interest income product. So BIL में अपना हम लोग $10 और increase कर देंगे. So that's all, friends. Thank you so much for watching this Global Master SIP with SD. I hope this video was helpful to you. Agar helpful, don't forget to put a thumbs up. All the best from my side. And as always, happy trading.